अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स ऑफ नस्ट। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज जहां हम आपके लिए लाते हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर ग्रेजुएट्स, आवर ब्रिलियंट एलुमनाई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज की स्टार ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद। हमारे साथ हैं जैनब बतूल रिजवी। अस्सलाम वालेकुम जैनब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Assalamu alaikum, Sana. Thank you so much for inviting me. जैनब EME कॉलेज की ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 2005 में ग्रेजुएट किया विद अ डिग्री इन कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड करंटली शी इज प्रोजेक्ट मैनेजर research projects at SMME Nust. Thank you, Zainab. I'm really glad we finally have the chance to sit down and have a talk with you. Yeah, thank you so much, Sana, for inviting me. And off and on, we have been talking, and I'm so glad that you chose to invite me to the show. Definitely, you're a star. We want to learn from you. SMME से तो मेरी बहुत स्पेशल एसोसिएशन है। आपको पता है SMME started on 28 September 2009 और उसकी Oh, very first class of the pioneer batch I taught that. So so it must be really special for you. yes, it is special. It's something I would like to tell my grandchildren one day. So yes, so very glad whenever I get to meet somebody from SMME. आप बताइएगा कैसा है इस्लामाबाद, कैसा है SMME और नास्ट? ओके, इस्लामाबाद में आजकल बारिशें हो रही हैं। इट्स फाइनली के अच्छा सही वाला विंटर्स आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और एंड यू नो इस्लामाबाद के विंटर्स एंड उसकी सड़कें एंड ऑल दैट, जो यहाँ जो इस्लामाबाद में रह के जाता है फिर उसे वो याद आती हैं चीजें। और एसएमई अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग वेल, इट्स फ्लरिशिंग माशाल्लाह। They've got an excellent alumni, sorry, they've got an excellent faculty. Most of them are from previous Nust engineers, alumni, and they've gone for PhDs and they've come back and now they're giving back to the country and to the university. So it's beautiful to see the amount of work they're doing and how dedicated they are towards bringing SMME forward into the next millennium. ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में नई चीजें लेकर आना, काम करना इज अ बिग चैलेंज. So it is appreciable the kind of work they're doing. They're trying to do the research they're trying to do and trying to bring about change. माशाल्लाह माशाल्लाह, that's very good to know and we know कि माशाल्लाह SMME कितना आगे आ गया है from where it started. इससे पहले कि हम जरा सीरियस क्वेश्चंस में जाएं, आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूछें एंड देयर आर अदर थिंग्स आई एम रियली इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, पहले बताइएगा आपका EME में टाइम कैसा था? आपकी कोई फन मेमोरीज हैं उस टाइम की? मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि EME कॉलेज था मेरे लिए, और इट इज एक्सपीरियंस कि आपको जिसे कहते हैं रगड़ा लगना, तो रगड़ा हमें सही वाला लगा था वहां पढ़ने में करने में। इसमें कोई शक नहीं है। देयर आर नो टू थिंग्स अबाउट, कोई कह दे कि नहीं नहीं ये था मुश्किल नहीं था, बहुत टफ था। बेस्ट मेमोरीज बहुत सारी हैं। मेरा ख्याल है द बेस्ट थिंग आई कैन से इज कि हम वहां पर छोटी छोटी बातों में बहुत खुश हो जाया करते थे। हम से मुराद, मैं अपना हम नहीं करी, हम से मुराद मेरे फ्रेंड्स हैं, सबा एहसन, जैनब सलीम, नवीन, तूबा, रिजवी, Aisha Farhat, Aziz, and Annie, and all of my friends. So Noman, Naz, Ahmed Khalid, all these people. So इनका ये था कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे। क्या बहुत कमाल हुआ, आज हमने कैंटीन से चिप्स खाए बनवा के, बहुत खुश हुए। और आज हमने समोसे वाली चाट खानी है, और ये चीजें, यही इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हम खुश हो जाते थे। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह में के बहुत बड़ी नेमत होती है कि यू डोंट नीड बिग थिंग्स टू बी हैप्पी, स्मॉल थिंग्स मेक यू हैप्पी। सो या दैट इज द बेस्ट पार्ट। उसके अलावा ये कि हालांकि रगड़ा बहुत ज्यादा था, और इट वाज द कोर्स वर्क वाज टफ, इट वाज वेरी हार्ड टू कीप अप विद द क्लास। एक करिकुलम बहुत टफ था, दूसरा क्लास माशाल्लाह बहुत कंपेरेटिव थी। वी हैड उस वक्त भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्मार्ट थे, और आगे चल के उन्होंने प्रूव भी किया। आयशा फरहत, खालिद रजाक, अदनान, ये लोग बहुत ज्यादा माशाल्लाह, बहुत मतलब दे वर वेरी एडवांस, तो उनके साथ काम करना and to keep up with them was hard. But the best part about engineering was कि I knew कि जो कुछ भी होगा हम यूनिवर्सिटी जाएंगे and something will turn up and we'll get it done. जो प्रोजेक्ट है, जो सेशनल है, जो एग्जाम है, we'll get it done. कुछ ना कुछ होगा यार, कर लेंगे। तो ये चीज जो थी ना, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये दोबारा फिर नहीं मिलती। ये उसी वक्त का ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट था
कि we had this ये नेमत थी कि we had this, वो बोलो भी होगा कर लेंगे, we'll go to university, we'll figure it out. आई थिंक ये सपोर्ट सिस्टम इस तरह का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस तरह आप बता रही हैं कोर्स वर्क भी टफ था, ऑफ कोर्स हमें पता है ईएमई के मिलिट्री कॉलेजेस के रूल्स भी टफ होते हैं, अगर उसमें आपको सपोर्ट फ्रेंड्स की ना मिल रही हो तो एट द एंड इट कैन बिकम वेरी डिस्करेजिंग. सो आई एम रियली 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 ग्लैड टू नो कि माशाल्लाह यू हैड सच अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस और आपके सारे हेल्पफुल फ्रेंड्स थे. Yes, actually positive और negative experience तो दोनों होते हैं. What you choose to remember and what you choose to pay attention to is the difference. I would like to keep the good things in mind कि ये अच्छी चीजें हुई थी. And obviously accomplishment बहुत बड़ी PhD sorry bachelor's कर लेना engineering में, being a girl, survive कर जाना, ये चीजें, these are big accomplishments no matter what happens or what afterwards. So they should be cherished. यस माशाल्लाह बड़ा अच्छा एटीट्यूड है आपका. प्लीज थोड़ा सा बताइएगा प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी. आपने ग्रेजुएट किया, वहां से उसके बाद क्या क्या हुआ आज तक? ओके, सो मैंने जब ग्रेजुएट किया था 2005 में, तो उसके बाद उस वक्त टेलीकॉम की बूम थी. लाइक आई वाज लकी, मेरे लिटरली दिन में दो इंटरव्यूज हो रहे होते थे. सुबह एक इंटरव्यू, सेकंड हाफ में एक इंटरव्यू, उस तरह से इनिशियली काफी वो था. सो बट जो इवेंचुअली मुझे जॉब मिली, वो मिली थी एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियर एट स्मॉल कंपनी, इंटरैक्टिव ग्रुप ऑफ कंपनीज. उसमें हमने, देयर वाज अ स्टार्टअप एट द टाइम, एंड वहां से फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ. उन्होंने ऐसा ऐसा काम करके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाए फॉर द कंट्री, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दोज बिग प्रोजेक्ट्स, एंड आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी. और बहुत सी चीजें इस तरह से थी कि जो हमने पहले कभी पाकिस्तान में नहीं की थी, जो कि हम कर गए, डिप्लॉय की, इंस्टॉल की, चलाई. उसके अलावा ये था कि ये सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान में उस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती थी जैसे अब होने लग गई है, और अभी भी देयर आर ह्यूज चैलेंजेस. तो उस वक्त द बिगेस्ट थिंग वाज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि भाई हमने एक चीज करनी है, हाउ डू वी do it, because we need the resources, we need the data, we need the case studies, we need the कोई आके सिखा दे, वो कुछ भी नहीं था. तो हम खुद ही अपना डेवलप करते थे अपने सॉल्यूशंस को. that was a big deal. और हम लोगों ने, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट के जो मतलब कि ये बहुत से काम ऐसे किए हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुए हुए थे, और हम कर गए अल्हम्दुलिल्लाह. हम से मुराद मैं, मेरी टीम, हमेशा आई लर्नड दिस फ्रॉम माय वर्क एक्सपीरियंस. नेवर एवर से आई डिड दिस, ऑलवेज से वी डिड दिस, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट. सो या, और उसके बाद बताइएगा आगे कैसे चलता रहा आपका प्रोफेशनल करियर? I sometimes think कि मैं ना अपनी करियर का वो समझती हूँ बस वही काम था, because it was इतना intense काम था कि उसको मुझे भूल जाते कि. So उसके बाद ये हुआ कि I had a child in 2011. In 2012, I realized that I cannot manage a baby and the kind of work I was doing, because my work was operations related, and it required 24/7 on duty presence. So I could not do it with a child, which is also another, a small baby is also a 24/7 job. So I couldn't do two jobs at the same time. So I chose to leave my job, and then I did my master's at from Case. जब मैंने मास्टर शुरू किया तो मैंने इनिशियली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वगैरह की तरफ जाने का सोचा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एडवाइस किया कि आप अब इस लेवल तक आ चुकी हैं, आपने प्रैक्टिकल काम 8 साल का हो चुका है, और आपने अब आप मैनेजमेंट की साइड पे आ चुकी हैं. आई वाज ऑलरेडी अ मैनेजर फॉर large team, about 30-40 people. I was a manager for that team. So I had and I did not have any skills for management. I had no knowledge, no course. I had done no coursework for management at the time. So my husband suggested that I should take on some courses in management. So I did one course in project management from Case, from Dr. Nadeem SM. एंड बस क्या कहिए कि उन्होंने क्या पढ़ाया या क्या था कि मैंने कहा हाँ जी, ये करने वाला काम तो ये था, असल में तो ये चीज सीखने वाली थी. सो देन आई डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट. So that was another journey. It took me 3 years, and I had another son at the same time, and alhamdulillah,
It was a good experience as well. I had some very, very good teachers who taught me a lot of things, and I still appreciate them. And I keep recommending all these new startups and companies that you should go and talk to these old hands, because they have experience. They know how they have experience of problem solving that you would not even imagine. नहीं, अगर आप एक चीज ये भी है कि अगर आप बाहर से कोर्सेज करते हैं ना, तो वो उनकी केस स्टडीज या उनका जो लाहे अमल है वो वहां के लोगों के हिसाब से है. तो यहाँ पे सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट. So you need to work with people who have work experience in Pakistan and who have management experience as well, who have scholastic knowledge of management as well. So मैं बहुत ज़्यादा recommend करती हूँ कि इन लोगों से जाके पढ़ें या इनसे consult करें. There are a lot of problems that new startups in Pakistan are facing can be solved through this. ठीक, माशाल्लाह. तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है. वैसे आपने अगर जॉब से ब्रेक ली बट यू वर स्टिल स्टडीइंग विद द बेबी, हैविंग अनदर बेबी इन द मीन टाइम. हम इस पे जरा डिटेल में आएंगे कि ये सब आपने कैसे किया. तो बताइएगा SMME तक कैसे पहुंची आप. उसके बाद I started teaching when I was in 2016. अभी मैंने thesis complete नहीं किया था. My friend asked me to help her with the course. Zainab, she asked me to help her with the course in IST. So I started teaching in IST. मेरा वर्क एक्सपीरियंस था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अच्छा, अब तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो करिकुलम का हिस्सा हो गया. एवरीवन स्टडीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और अब जब रिसेंटली मैंने 2019 मैंने ये देखा कि लोग कह रहे थे कि मैम हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है. ठीक है, वी वांट टू गो इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इंजीनियर्स वर सेइंग हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करना है. वी वांट टू गो इनटू दिस साइड ऑफ facet of engineering. But उस वक्त I had an uphill job trying to convince the class that this is also a subject that has to be studied and it's really important. So उस वक्त मैंने I remember कि मैंने बहुत मेरे लिए tough था how to make this course interesting enough and to make it practical, कि इनका उसका इसका प्रैक्टिकल आंसर हो जिससे ये लोग सीखें कि अच्छा ये एक्चुअली कैसे अप्लाई होता है. ये भी कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और ये भी असल में लगते हैं और इनसे कोई आउटकम्स आती हैं, क्वांटिटेटिव आउटकम्स आती हैं. और इंजीनियर्स को काबू करना और उनको राजी करना इस पे लेकर आना is a little challenging. So, but since I had gone through this myself, so I had a wonderful experience teaching them. And then उसके बाद फिर मैंने कुछ ऐसा teaching की. Then in 2000, end of 2018, 2017, end of 2017, 2018, I did Naya Aghaaz. I worked as a Naya Aghaaz associate at Telenor. And I got to work on some very good projects. I got to work with some very experienced people over there. And वो भी काफी अच्छी experience. And I got to actually apply the sort of the management concepts I had learned at a case. So that was a lot of fun. Knowledge management, change management वगैरह ये चीजें भी समझ आई. और engineering के perspective से कि एक data center लगने लगा है, कैसे करने वाले हैं, ऐसा की चीजें. So that was a lot of fun as well. It was a good experience. Uske baad I went back into teaching because again the work was very tough and कुछ मतलब कि projects वगैरह उस तरह से नहीं आगे pipeline में आ सके. So I went back into teaching and now in 2021 this job just came up as project for from SMME for project management, and I said okay, I'll work on it. And now I'm working as a project manager, and I've been forced into it. Now I have to work into AI and research and all. By the way, since I did my thesis, I've been working as an independent researcher. So wo cheez bhi I've been learning from people, and I've been working with people abroad as well, and I've been working on research. And this is on my own, not a paid job or anything, but I've been working on my own and building my ability to research, as well as, building my knowledge on management of information systems, business information systems. So I kept on working on that. And I'm also now working as a project manager. माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त. और इसके एक बात पे बल्कि मैं कमेंट करना चाहूँगी, जहाँ आपने कहा कि इंजीनियर्स का मैनेजमेंट कोर्सेज से इतना क्लोज रिलेशन स्पेशली पहले नहीं था और अब है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई टॉट एट सीक्स,
वहाँ पे भी मैंने मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ाए थे बीआईटी के स्टूडेंट्स को, और उनको मार्केटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने में ही, जो आपने कहा, कन्विंस करना बड़ा काम था। उनके ख्याल में ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज नहीं थे, सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड व्हाट आई फाउंड very heartwarming lately through this Stars of Nust series, when I connect to people, and I have been interviewing my students as well, mashallah, they are doing well. So many of them come to me and tell me कि जो आपने पढ़ाया था वो तो हमें हर रोज काम आता है, उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। Exactly, that has happened to me as well. That the people I taught, and they've come back and they've said that, oh, we've applied what you taught, we have applied it, we've actually used it, or we went into job interviews, and because of what you were telling us, what you had taught us, we were able to answer certain questions or solve certain problems, and we got the job. Or that happened to quite a few times, and it is so gratifying. It is so gratifying. Yes, like I mean, all that effort came back, कुछ फायदा हुआ है। Yes, is definitely. और as students भी, as faculty भी इस चीज को realize करने की बहुत जरूरत है कि of course technical courses are very important. You are making engineers, nobody is denying that. But management courses, you can't take them out. They have to be there अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो जाके कहीं corporate world में काम कर सकें, कोई projects hand on experience कर सकें, तो it's very important to management courses को importance दी जाए। Exactly. Actually, management का ही बात है, there are two facets of it. एक, first, learn to manage yourself. That's the first thing you learn. Learn to manage yourself. Learn to manage your skills as well as your weaknesses and your time and everything. You learn to manage yourself first of all, and then the next thing is that you learn to manage your team. And that's really important, because I remember when I was teaching at IST, a professor there, Dr. Saida, Dr. Saida, she'd just come back from France, and she said that we even at the PhD level, we are taught, actually given, we are taught workshops in which we are taught how to deal, how to get resources, how to deal with the administration, how to deal with the academia, how to get grants so that we can do our research. So it's that important. It doesn't matter if you are working in a corporate sector or if you're working in academia. You still, or any other place. If you have a startup, then definitely these concepts are really important. And yes, they should be taught at the base level, ground up. They should be built into the curriculum. They are. ऐसा हो रहा है, वॉशिंगटन अकॉर्ड जो है, जो साइन हुआ है, उसकी वजह से काफी चेंज आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको भी अपडेट किया जाए। द प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग इज, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आ रही, और जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं वो इंजीनियर्स के हिसाब से नहीं दिए जा रहे। सो अगर उसको अपडेट करके ये चीज लेकर आएंगे, तभी वो स्टूडेंट्स कुछ सीख पाएंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है। So yes, let's hope कि हम ये इसका एक अच्छी सी फॉर्मुलेशन बना सकें कि ना हम टेक्निकल कोर्सेज को डिनाई करें उनकी इंपॉर्टेंस, लेकिन हम मैनेजमेंट को भी नहीं निकाल सकते। आगे चलना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपसे पूछने में और इस पे एक डिस्कशन करने में, बिकॉज आपने एज अ मॉम ये सब कुछ किया पाकिस्तान में होते हुए, जहाँ पे इस तरह की मिटर्निटी लीव की, या पैटर्निटी लीव का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन एज अ मदर आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आपने फिर भी स्टडीज कंटिन्यू की, जो बच्चों के साथ बिल्कुल आसान नहीं है, बट यू डिड इट। तो थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आप काम भी कर रही हैं, जब आप पढ़ भी रही हैं, लीविंग द जॉब, री एंटरिंग द वर्कफोर्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं आप, और क्या बता सकती हैं आजकल की बच्चियों को, आई वुड से। Okay, this is a very pertinent question, and I think ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा तफसील में समझने की जरूरत है, और इसको पॉलिसी लेवल पे और यूनिवर्सिटीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह इस चीज के लिए काम होना बहुत जरूरी है। पॉलिसी लेवल पे काम होना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी कंपनीज की पॉलिसी में क्या चाइल्ड केयर, क्या खवातीन के लिए किस तरीके से वो जगह बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। सो दैट विमेन आर इम्पोर्टेंट वर्कफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स है, ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सिर्फ अकेले आदमी काम नहीं कर सकते। दैट वुड मीन आप 52% ऑफ पॉपुलेशन से कह रहे हैं कि तुम कोई तरक्की में, डेवलपमेंट में कोई काम ना करो। दैट डज नॉट वर्क।
and life is not that pleasant that nobody needs to work, everyone needs to work actually. एक तो ये चीज हो जाती है कि कहीं ना कहीं हर एक को जरूरत होती है, और सो ये कोई ये नहीं कि जी औरतों को काम करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं एक्सेप्टेबल, ये दिस कॉन्सेप्ट हैज टू नाउ हैज टू फिनिश. सो अब काम करने की जरूरत है, तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट इस तरह का बनाने की जरूरत है जहां पर खवातीन काम कर सकें. दैट वुमेन कैन वर्क, दैट हैज बीन प्रूवन एंड अगेन. अगर आप देखें तो बाहर के मुल्कों में कितना ज्यादा काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम खवातीन कर रही हैं, जितना आदमी कर रहे हैं उतना औरतें कर रही हैं. तो वो तो फर्क नहीं है. मसला क्या है? मसला जस्ट फ्रेम ऑफ माइंड का है. फ्रेम ऑफ माइंड अगर आपका ये है कि हाय ये लड़की आ गई, इसका मैं क्या करूंगा, और इसको मैं कैसे काम कराऊं, और ये तो मसले हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आप अगर किसी में गलतियां निकालने बैठ जाएं तो फिर तो बहुत सारी खराबी हैं. और उसमें ये बेसिकली जो 2-3 चीजें करने वाली हैं वो ये है कि डे केयर सिस्टम होना बहुत जरूरी है, चाइल्ड केयर सिस्टम होना बहुत जरूरी है. ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि बच्चे जो है वो बच्चे जो है ना वो या तो घर में नानी दादी पाल दे या कोई आया रख लो और वो पाल दे, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आइदर. सो यू नीड proper daycare systems जिस तरह ताकि उनसे हेल्प हो सके. And this goes not just for engineers, it goes for all working women, for doctors, for managers, for finance people in finance, for nurses, for everyone. जो जिस फील्ड में भी है, एक प्रॉपर केयर गिविंग सिस्टम सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है. एंड मैं ये समझती हूँ कि नॉट जस्ट फॉर women but for men as well, because there are some families जहाँ पर जिसमें मतलब there is no woman and a man has to take care of the kids as well. तो सिंगल वो भी डैड्स. सिनेरियो, उसके अलावा भी सिनेरियो हैं जिसमें ये है, अगर सपोर्ट मिलेगी तो ये हम, बिकॉज वी शुड थिंक दैट जो अगर बच्चे पालना है तो वो एक कम्युनिटी की जॉब है, एंड नॉट जस्ट द वुमन एंड नॉट जस्ट द मैन, कम्युनिटी की जॉब है. तो फिर उस तरफ देखा जाए तो फिर थिंग्स कैन बी अ लॉट इजियर. एक तो ये, दूसरी चीज ये मैं समझती हूँ कि फॉर वुमेन स्पेशली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब आप जॉब, when you take on a job, when you're signing that contract, please read that contract and pay attention and see if there is what kind of maternity care they're giving, what kind of health benefits they're giving, what kind of leave, work home balance they are providing, if they're committed towards it or not, and lastly if they have a daycare system in place or not at that organization. Those things are very important and should be considered right at the beginning of your career, and every time you switch a job. And it doesn't matter if you have children now or you do not, you will inshallah at some time in your life, and even if you don't, somebody else will be thankful for the effort you put in. Yes, So these battles have to be fought. I'm sorry, this is a battle that has to be fought. Okay, there's a blind spot for people that they do not realize that this is important, and that has to be combated. So ये चीज बहुत जरूरी है. नहीं नहीं, आई टोटली अग्री. सॉरी आपको कट कर रही हूँ, मैं एक कमेंट देना चाहूंगी कि आई टोटली अग्री. मुझे लगता है कि हम ये जो टर्म जो है ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर फीमेल्स बड़ा लूजली यूज कर लेते हैं. वी डोंट रियली अंडरस्टैंड, by we I mean mostly men actually, don't really understand what do we mean by environment being conducive. क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, most of the people stick to the term रेशो कितना है. हम तो हायर कर लेते हैं फीमेल्स को. We are not saying you don't hire females. We are saying, are you providing them a safe environment? A safe environment means जहां उनको पता है कि उनकी safety है, security है, psychologically भी. By psychological safety, I mean कि उनको पता है कि उनकी family is in good hands or taken care of, or they have the flexibility to manage work and they can give their best at work as well as at home, because आप उनको एक conducive environment provide कर रहे हैं for the responsibilities. Please बताइएगा जो आप कह रही थी. इसमें एक चीज है कि देखें, conducive environment is not necessary just for women, it's also necessary for men. Sure. Again, I said that parenting is not a अल्लाह मियां ने 2 लोग बनाए हैं. So parenting is not a 1-person job, it's a 2-person job. So मैं ये समझती हूँ कि बहुत दफा ये आगे चल के नजर आता है. जब when you become like, जब आपका like in your 40s and your 50s, you realize that जो आदमी अनथक काम करते हैं और बेइंतहा दिन भी लगा रहे, रात भी लगा रहे, in the long run उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा सफर करती है और वो बाद में उसका नुकसान उठाते हैं. So अगर environment conducive है, it is family oriented, it is उसमें ये मतलब इस तरह के effort की जा रही है,
तो उसमें हर एक का फायदा है, नॉट जस्ट वुमेन, इट्स यूजफुल फॉर एवरीवन। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये जो हमारे जो है ना, ये चीजें ना पॉलिसी लेवल पे ठीक होने वाली है। पहले ये चीजें पॉलिसी लेवल पे ठीक होंगी, फिर इसको हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब ये नीचे आना शुरू होगा। और इसमें ये बात है कि और ये देखिए कि जहां पर खवातीन जब साथ मिलकर काम कर रही होती हैं तो वो एनवायरनमेंट बेहतर होती है वहां पर। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अब जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे जो पहले जो बॉस थे तारिक मलिक साहब, उन्होंने ही said every team has to have women in their team because this is the environment मुहज़्ज़ब हो जाती है। लोग तरीके से बात करते हैं, तरीके से साथ रहते हैं। दिस इज अ नेचुरल थिंग। एक फैमिली एनवायरनमेंट बनती है तो उसकी वजह से ये चीजें बेहतर होती हैं। दीज आर थिंग्स दैट आर नोट, दीज आर जस्ट आउटवर्डली हमें नजर आ रहा है कि इसका ये फायदा है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। एंड जब ये चीजें ऐसे जगह पे आती हैं, देन people can work, or people can women or men can choose not to work and stay at home and take care of the child, that if that is what suits them। but एक environment हो, एक choice का, the person should have the choice, the luxury of choice, कि मैं ना तो मजबूर हो रही हूँ नौकरी करने पे, और मैं ना मजबूर हो रही हूँ नौकरी छोड़ने पे। that is a thing that has to be in place। And I think that really brings out the best in you, क्योंकि अगर आप सिर्फ मजबूरी में जॉब करेंगे या आप मजबूरी में घर बैठेंगे तो in either roles you cannot perform your well, आपकी you're not contented with it and then it doesn't make any sense। So बहुत जबरदस्त आपकी input है, and I hope कि in the long run पाकिस्तान में भी organizations में ये जरूर implement हो। I can see some change at some level, लेकिन overall अभी भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा हमें mindset change करने की ज़रूरत है, policies change करने की ज़रूरत है। पॉलिसीज वेलबींग, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है, जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन की वर्क लाइफ बैलेंस हो, और एम्प्लॉय वेलबींग पे ध्यान दिया जाए, इसको मॉनिटर, प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, और इसको फिर देखा जाए कि कैसे आपके एम्प्लॉयज की वेलबींग में वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। उनकी बहुत ओवरवर्क करने की वजह से फिजिकल मैनिफेस्टेशंस जो उसकी निकलती हैं वो आदमी औरतों में बराबर की निकलती हैं। और लॉट ऑफ मेन हैव हेल्थ इश्यूज एज वेल, जो मैंने देखे हैं, वो जो बहुत परेशान कुन है कि वो प्रॉब्लम्स जो पहले आती होती थी एंड एज ऑफ 50s और 60s, अब वो 30s और 40s के एज में लोगों को होने लगी। ये चीज नाकाबिल, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। ट्रू, बिल्कुल तो ठीक है। ये देखना चाहिए। Thank you so much for your input. I really liked it, and I hope somebody hears it and implements it, inshallah. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी। आपकी लाइफ में कोई इंस्पायरिंग फिगर है जिन्होंने आपको हेल्प किया हो, आपको मोटिवेट किया हो, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस एट होम, और आई वुड से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, यू केप्ट गोइंग, देयर मस्ट बी समथिंग और समबडी। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं कहूँ कि डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस, वेल वो है ना कि द चैलेंजेस मेक यू अ बेटर पर्सन। इफ देयर आर नो चैलेंजेस तो फिर मजा क्या है। दूसरी चीज ये है कि मैंने बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया है। मैंने उस तरीके से अपने करियर को कंटिन्यू नहीं किया जैसे मैं कर सकती थी, अदर्स द वे अदर्स हैव और माय मेल काउंटरपार्ट्स हैव, बट आई डोंट रिग्रेट इट। there has to be, again, there has to be a work life balance that has to be maintained। तो ये इसलिए I will pick my battles and I will not, there are some things I will not compromise on। तो वो चीज है, and despite that, yes, I will keep going because अल्लाह मैंने जो दिया है वो उसको मैंने यूज करना। the facilities I've been given, I will make the most of it, inshallah। इंस्पायरिंग पर्सन जो बहुत सारे लोग हैं, सम मेन सम वुमेन। एक तो सबसे ज्यादा डॉक्टर शोएब हैं। आई नो हर कोई उनका नाम लेता है, लेकिन यस, आई विल टेक हिज नेम एज वेल, कि उनको देख के, उनके बात करने से, उनका उठना बैठना लहजा उनका, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड आई विश कि हम सब में, मेरे में खास तौर पे वो ठहराव आए कि इस तरीके से आप संभाल लें, नॉट वरीड अबाउट थिंग्स। एंड बट द अदर पर्सन जो बचपन से जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, जिनका असर था, वो ब्रिगेडियर वजह हसन थी। She was one of the first doctors in Pakistan, and she became in 1960s she went abroad to for her further studies, and then she came back and she joined the Pakistan Army and 1960s 1970s में, and
I think she was one of the first, either the first female brigadier of Pakistan or one of the first. Probably. Yeah. Yeah. And she was my mother's teacher. My mother learned everything from her. Mashallah. So my mother said, "Look at, explain to me. Look at her. Look at this person." And what I saw was that she was uh, there was she was at the height of her. Technically speaking, she was brilliant in her work. And then on top of that, she was morally and ethically upright. Mashallah. Yeah, that's So even as a child, whenever I would meet her, and what I learned was she was honest, always honest. Mashallah. And because of that, my mother told me, and we saw that she had a lot of problems in her career and not to go to advance her career and all that. And आप सोचे 1960s 1970s में career advance करना बहुत बड़ी बात है. But what she did, she never compromised on her principles, and she was always honest. And that is something I feel I wish that our leaders would have now. हमारे जो not just leaders as in political leaders, Of but course. leaders in all fields and all. I wish ये चीज लोगों में हो. And yes, I admire her, and I wish I could be. To this day, I wish I could be more like her. And a lot of my decisions were inspired by her. Like, because okay, now she's done it, so I can do I this can do too. it as well. So if she can go abroad, and if she can do in 19 in just right after Pakistan was made, if she can go become a doctor, then I can be an engineer. So yes, those kinds of things. माशाल्लाह, so good to know कि इतनी इंस्पायरिंग फिगर और फीमेल फिगर थी जिन्होंने आपको थ्रू आउट आपको गाइड किया. सो आज हम स्टार्ट करें एक नया सेगमेंट विच इज कॉल्ड अवाम का सवाल. और ये सेगमेंट हमें सजेस्ट किया है खुरम मखदूम, जो कि एमसीएस के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने. और इसमें हम फॉर नाउ ट्राई ये करेंगे कि अपने गेस्ट के फ्रेंड से पूछें कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. ओके. सो मे बी इन द लॉन्ग रन हम जनरली पब्लिक से भी पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हम फ्रेंड्स तक लिमिट कर रहे हैं. सो आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे पास मदीहा बशारत ने पूछा है, जो कि एमसीएस की ग्रेजुएट हैं. And she wants to know if you want to share any fun memory with your best friend. Oh, Madiha Basharat. Oh, Khudaya. I'm glad she was in MCS, so she's also a Nustian, but that doesn't make a difference for me. I mean, we've been friends since we were 6 years old. So Wow. there are so many memories. There's so many good and bad memories that we've been through a lot together. So the first thing I remember about her is that I saw her in Roots. We were both in Roots and studied from Roots, and I saw her. She was teaching people how to do cartwheels, and that was my first memory of her. And I was like, and she was so energetic. It was such a good time, and we did so many things together. Like she would bring lunch and we would share it. That is something else I used to enjoy. And we both used to love to read a lot. And किताबें कम पड़ जाती थी, तो हम लोग वो शेयर कर रहे होते थे कि इससे किताब ली, उसने मुझे दी, किताबें ही नहीं मिलती थी, पूरी नहीं पढ़ती थी हमें. So we used to share books. And I remember, I think I was very young, maybe 7, 8 years old. And I gave her a book because I really liked it. And she said, yes, it's so good. And I was so happy that finally there's someone who also likes to read and who understands why I like this book. So that's the way. Yeah, that's so sweet to know. और वो भी she speaks very highly of you as well. So good to know. इतना प्यारा बॉन्ड है आप लोगों का, माशाल्लाह. Thank you so much, Zainab. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Especially the topic we talked about, it's pretty close to my heart. So glad to have your input on that. हमें interview wrap up करना पड़ेगा, but बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का. Thank you so much for taking the time out, and hopefully we'll stay connected. Oh, inshallah. Thank you so much for inviting me once again. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you everyone for watching. Allah Hafiz.